guys, so I'm starting a new series on my channel, and this is for class 9th students who are in ICSE 9th school, who are currently studying the maths of class 9 or studying with the book from the book of ML Agrawal and Concise. I'm taking up the syllabus one by one, starting from first chapter onward. You can use them for your revision if you have done them already, and otherwise you can have the concept building from these videos. So I'm assuring you, after you go through this video, you will be having the idea of rational and irrational numbers, the decimals which represent rational number and irrational numbers. How do we deal with rational and irrational numbers? What are rational numbers and what numbers do we call as irrational number? So let us understand this concept one by one. I understand that many of you have gone through this chapter already. You must be nearing your half-yearly exams, and you're going to have this chapter in your half-yearly exams as well. So those people, those students can use this video for their revision. So right now I'm starting with the concept of rational and irrational number. Basically, I am discussing initially the types of numbers and what categories do we have in numbers. So let's start right away. Keep your copies and pen along with you. You should make notes. You should keep on writing it up. Share the link of this video with your friends. See it together with your friends along, and try to make up the concept from this video. Let's start बच्चों. So अभी मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर कि numbers की categories कितनी होती हैं. So broadly you see I divide numbers into real numbers and those numbers which are non-real numbers. Non-real numbers को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, और बाकी सारे नंबर्स एक सेट में आते हैं जो कि एक रियल नंबर का सेट होता है. तो अपने दिमाग में आप नंबर्स का टाइप सोचते जाइए. आई एम रीडिंग देम फ्यू फॉर यू. सो रियल नंबर्स, आई से नेचुरल नंबर्स, I say whole numbers, prime, even, or integral numbers. All these numbers are actually real numbers. I can add more into it. I can add rational numbers, irrational numbers. ये सारे numbers रियल नंबर की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये ऑड हैं, ये डिविजिबल हैं, ये नॉन डिविजिबल हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं. कुछ भी आप सोचते जाइए, स्क्वायर रूट्स में आ रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में हैं, नेगेटिव्स हैं, डज नॉट मैटर. ये सब के सब रियल नंबर्स होते हैं. तो फिर कौन से नंबर्स नॉन रियल हो जाते हैं? So I take little time to explain this. Now suppose you have x square equals to 4. You got x equals to 4 with plus minus sign. x2 आ गया और x minus 2 आ गया. अब आप x square equals to minus 4 कर दीजिए. x equals to under root minus 4 आ गया. x equals to under root minus 4. क्या आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए. अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा. आप -2 का स्क्वायर करिए, फिर से 4 आएगा.
आप -4 का स्क्वायर करिए, आप -2 का स्क्वायर करिए, 4 आएगा, स्क्वायर ऑफ 2 भी 4 आएगा। दैट मीन्स -4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर बन जाए, और ऐसा अगर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर 4 और एनी नेगेटिव नंबर। दैट ऑल्सो मीन्स दैट नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स नॉन रियल बन जाते हैं। यही नॉन रियल नंबर्स की स्टार्टिंग है। तो हमारे पास एक लाइन है, रियल नंबर्स एंड नॉन रियल नंबर्स। हम बहुत सारे रियल नंबर पढ़ने के बाद एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब हमको नॉन रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। Are you getting my point? I hope you are making up your mind about real numbers and non-real numbers. So हमने broadly numbers को define कर लिया। Imaginary लिखा हुआ है मेरे यहाँ पर और एक real numbers लिखा हुआ है। हमको नॉन रियल नंबर्स पर फोकस नहीं करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं इनको। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं। For a while we got to focus on real numbers. Let us understand which numbers are real numbers now. So when I say that every number, whatever it might be, basically makes up a real number. Let us see how. So I take up rational numbers. I will describe them one by one later on. Irrational numbers. Rational numbers are integers, non-integral values. They all are rational numbers. Integers, non-integral rational numbers, ये सारे रियल नंबर्स हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर एंड देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल्सो। देन वी हैव व्हेन वी हैव whole numbers. Now all these are belonging to the set of rational numbers. They might be non-integral rational numbers, they might be whole numbers. Think in your mind, they might be prime numbers, they might be odd numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, whole numbers. All of them, they all are real number. Let us concentrate now on rational numbers. That what are rational numbers? हम अपने चैप्टर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, rational numbers and irrational numbers. So a rational number, I write the number 2. I write number -2, 2 upon 3, 3 upon 2, -1 upon 2, 2 upon 5, -2 upon 5, -0 upon 5, -5 upon 0, 2 upon 0, 2.33, 2.35, 2.311111, and it's going on. I'm explaining later on all these numbers. 2.3 bar, 2.354 bar. If I say I'm clubbing them, all of them are belong to the category of rational numbers. They all are rational numbers. So I read from here for you. The number is expressed as a by b, where a and b are both integers and b is not equal to 0 is called rational numbers. ऐसे सारे numbers जिनको हम a upon b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहां पर a और b दोनों integers हैं and b is not equal to 0, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. So आपने पढ़ा होगा number in the form of p upon q, where q cannot be 0 gives us a rational number. हम किसी भी नंबर को जिसको हम p upon q की जिसका हम फ्रैक्शन बना सकते हैं,
जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स रैशनल नंबर बनते। तो 2 is 2 upon 1 minus 2 upon 1, 2 upon 3, 2 upon 5, 3 upon 2 minus 1 upon 2, 2 upon 5. All these are fractions. All these are p upon q, p upon q, p upon q, and p upon q. 2.33 is 233 upon 100. 2.35 is 235 upon 100. And then you got 0 upon 5, also a rational number. 5 upon 0 is not a rational number because here q is equals to 0. And we know this that we cannot have any such fraction where denominator has 0. It is not a real number. जिस किसी भी fraction में denominator 0 हो उसको outrightly non real, non calculable कुछ भी कह दीजिएगा, वो कुछ भी reality number नहीं होते हैं, वो कहीं पर भी add subtract या उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए हम जब तक fraction बना रहे हैं जब तक डिनोमिनेटर में एक 0 नहीं आ रहा है। ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। इनको हम q से डिनोट करते हैं। यू कैन सी हियर हमने इनको q से डिनोट किया है और a upon b such that a and b belongs to integer where b is not equal to 0 is a definition of a rational number. A upon b is a rational number if b is not equal to 0. Another point now, so I write 20 upon 25. I write 3 upon 4. 20 over 25, we got a 5 as common number. Here is saying that they have no common factor other than 1. जिसका कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है। 3 upon 4 में 3 and 4 का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो जब तक मैं किसी भी फ्रैक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता हूं कि इन दोनों के अंदर कौन फैक्टर हुए, लाइक 5 upon 7, राइट, 10 upon 14 and this 5 upon 7. This is the correct representation of a rational number, not 10 upon 14. That means A and B are co-prime. The word is co-prime. What are co-prime numbers? Which do not have anything common except 1. जिनके बीच में केवल 1 कॉमन हो और कोई नंबर कॉमन ना हो, ऐसे नंबर्स को co-prime नंबर कहा जाता है। B is usually positive, whereas A may be positive. Now, this point does not have any kind of significance in the fraction 3 upon 4. I write minus 3 upon 4. I write 3 upon minus 4. They all are actually minus 3 by 4. All these makes a rational number. ये सब rational numbers form करते हैं। ये सब rational number की कैटेगरी को belong करते हैं क्योंकि ये a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। Let us talk about some properties of rational numbers. Sum of 2 or more rational numbers is always I am writing simply two numbers 2 and 3 and I add them, I got a rational number. So you add a rational number, you add a rational number, you get a rational number. In other words, I can say rational numbers are close to addition, close to subtraction. Difference of two rational numbers is always a rational number. 5 minus 7 is minus 2, 7 minus 1 is 6, 3 minus 4 is minus 1. All these are rational numbers. The product of two or more rational numbers is always a rational number. So I'm cutting it short. So addition, subtraction, multiplication and division are close on rational number. You put a rational number and you get a rational number. So you add two rational numbers, you find difference of rational numbers, you find product of rational numbers, you divide two rational numbers. It will gives you output as rational number only. Rational numbers. Now in division, take one thing care of, that we should not divide by a zero number. It should be a non-zero rational number. Only then we get a rational number as output for division of two rational numbers. I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े से असाइनमेंट्स के लिंक भी पोस्ट करता हूँ, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज देम फॉर योर रिवीजन, फॉर योर प्रैक्टिसेस। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक द वीडियो, subscribe the channel, share this video with all your friends who are in your group who are preparing for the half yearly exams. Right now I'm giving you a video for rational numbers, the rational number. Since the sum, I will also post this PPTs along with the description box. Whatever I'm writing it up here, you can always use it again. I'm going to post the PPT of these slides in the description box as well. You can take these PPTs from there. The sum of two rational numbers is always a rational number. We say that set of rational number is closed for addition, it's closed for subtraction, it's closed for multiplication, and it is closed for division also, such that the divisor, the denominator, should not be 0. So I'm writing an example here. 3 by 4 minus 4 by 3 is going to be a rational, I guess. 3 by 4 into 5 by 6 is also going to be a rational number. You add two rational numbers. You got 9 plus 16, that gives you 25 by 12, again a rational number. You multiply two numbers, I multiplied it here. You divide two numbers, I divide 2 upon 5. It is very well rational number. 2 upon 0 is not a rational number. 2 upon 0 is not a rational number because the denominator has become 0. We cannot have a rational number where denominator is a 0. We need to have a non-zero fraction only. Let us move on and talk about the rational numbers in terms of decimals. Now, I'm expecting at this level of your class, you have a knowledge of decimals. So let us see what are the various aspects of decimals. So I'm dividing it 1 by 8 and it gives me the answer 0.125. So you see here, we cannot have anything else after 5. Decimal has end. We got the final values 1, 2, 5. We cannot have any other remainder or divisor or whatever and what not. So when I divide 1 by 8, I got a complete decimal number which is terminating. मतलब कि खत्म हो जा रहा है. ऐसे decimals को terminating decimals कहा जाता है. 1 upon 25 is 0.04, 1 upon 4 is 0.25, 3 upon 5 is 0.6. You can think in your mind various decimal numbers which are terminating. In each example given above, division is exact, no remainder is left. The quotient of such divisions are called terminating decimals. Non-terminating, divide 1 by 3. 0.33333. How many? I can write infinite those after that. So it is 0.3 bar. This bar means only 3 is repeating itself. 0.3333. It is a non-terminating repeating decimal. I'll discuss later on what is non-terminating repeating and non-terminating non-reoccurring. I'll take it all in detail later on. But right now I'm taking two things only. Decimals are of two types, terminating and non-terminating. So does it mean that they both are not rational numbers? They both are not rational numbers? No, they are very well rational numbers. Only thing is that they have two categories of decimals. One is the terminating decimals, the other is a non-terminating decimals. I hope I'm clear to you all guys. Okay, I move on from there. You send me your suggestions, आपको चैनल में क्या चाहिए और कौन से चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, किन के आपको टेस्ट लिखने हैं. I will help you out in providing you all the material and content on this channel. Just subscribe the channel. All these videos are free to use. You can share them with your friends and increase the subscriptions of this channel. Then comes non-terminating. Now I'm writing up two numbers here. One was terminating.
Now the other one comes non-terminating. It has got two categories. The first, non-terminating, reoccurring, and non-terminating, non-reoccurring. So non-terminating, now terminating are of course very well rational numbers. They comes as a result of a fraction, 2 upon 8, 3 upon 5, 1 upon 4. You understand that, we have done previously. Now non-terminating decimals, there is a fraction 4 upon 8. I'm getting 0.44444. What does that mean? That it is a recurring number. 4 is coming infinite times. I show the division of 9, 4 by 9. I don't think I should solve it for you because you can always divide 4 by 9. Now what is happening here is that I'm getting 4 repeatedly, infinite number of time. The same number is repeating. Reoccurring number, but never coming to end. Non-terminating, reoccurring decimals. Terminate नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन reoccur होता जा रहा है. Understand? Is 11 by 30 is 0.3666. It is 0.36 bar. Number is repeating. 6 is repeating. After another, 6 is not coming to end. 0.36 bar, 0.4 bar. All these are non-terminating recurring decimals. You can see here 571428. Then again comes 571428. I write down one more 571428. You can add one more 571428. You can see that they all are the number is repeating in the group. Recurring decimal है, group repeat हो रहा है पूरा, कभी भी खत्म नहीं आता जाएगा इसके बाद. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ये सारे, ये सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं. सो मेक इट अ पॉइंट इन योर कॉपी दैट रैशनल नंबर्स कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं. I move on from there because I have taken the second category of after this category now, non-terminating and non-reoccurring. So इसलिए मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूं. हम रैशनल नंबर से आगे बढ़कर पहुंच जाते हैं इरैशनल नंबर में. इसका सबसे एक जो इसका आइडेंटिफिकेशन है वो ये है that these numbers are non-terminating and non-repeating. Non-reoccurring decimals. इसका मतलब क्या हो गया? I write the number here 0.424344510001113891. Look, you go on, you carry on like this and it never come to end. Non-terminating decimals हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, नए नंबर आ रहे हैं, पहले के बाद दूसरा नंबर नया आ गया है. नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं. नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जिसके भी बन जाते हैं वो सारे के सारे इरैशनल नंबर्स हो जाते हैं. सो इरैशनल नंबर्स, इफ आई फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, square root of 41, square root of 43, and in such numbers square root of 42, they all comes out to be non-terminating, non-repeating decimals and they all are irrational number. आप क्यूब रूट फाइंड करिए, आप क्यूब रूट ऑफ 3 फाइंड करिए, आप 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, ये सब निकालते जाइए, ये सारे के सारे irrational numbers होते हैं. So always understand जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं,
लाइक इफ आई फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो वो 4 आएगा। ये एक रैशनल नंबर हो गया, बिकॉज 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब स्क्वायर नंबर हो तो उसका कंप्लीट रूट आ जाता है, लेकिन जब नॉन परफेक्ट नंबर्स लाइक 5, लाइक 3, लाइक 2, उनके स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल नंबर्स आते हैं। सर्ट्स बोलते हैं इनको, हम आगे सर्ट्स की पढ़ाई करेंगे, आगे हम डिटेल में इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उनको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मेनी थिंग्स इनटू दैट। राइट नाउ अंडरस्टैंड दोज डेसिमल नंबर्स which are non-terminating and non-repeating are known as reoccurring, are known as irrational numbers. How do I represent a rational number and irrational numbers on the number line? Basically, if I say that the real numbers are those numbers which can, which can be represented on a number line, I will not be false here. ऐसे सारे नंबर्स जो रियल होते हैं उनको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई कैन पुट अ डॉट फॉर नेचुरल नंबर्स। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। आई गॉट होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6। ये सारे भी होल नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स भी हैं। इंटीजर्स गोज बोथ साइड, प्लस माइनस 1 to 6 here and 1 to 6 here. Number line for fractions, you all have done this before. All these are the real numbers, and all these can be marked on, located on, determined on the position on the number line. So we can always do that. I'm talking about the new thing I'm talking about. So I hope by now you know what are the irrational numbers. Let us understand. We have learned in this slide that we can mark the rational numbers, the real numbers, the rational numbers on number line easily. All these are rational numbers and can plot these points on a number line. Let us talk about how to plot irrational numbers on the number line. So you can see, let us take example of root 2, that I have to mark a number root 2 on the number line. Now root 2 is an irrational number. root 2 एक irrational number है। root 2 की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं आ सकती है, क्योंकि इसका डेसिमल 1.414 से आगे इंफिनिटी तक कंटिन्यू होता रहता है। ये एक नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। प्लीज ये वर्ड्स याद कर लीजिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। आपको कोई भी इनका एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है जिसको कि आप राइट अवे नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर सकते हो। क्या करेंगे फिर उसके आगे आप, फिर कैसे इसको प्लॉट करेंगे? देयर इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्लॉटिंग irrational number on a number line. So I've given you steps here. You can see the steps given to you here. But I tell you what, make a number line and mark a unit on your number line, positive and negative both sides. Let us take one unit, mark it as O, mark it as A. At this point A, draw a perpendicular I hope you all know to draw perpendicular. Draw a perpendicular and the unit 0 to 1, it can be 1 centimeter or 1 inch or whatever you want to have. उतना ही यूनिट यहां से कंपास की हेल्प से इसमें मार्क आउट कर लीजिए और इसको बी पॉइंट मार्क कर दीजिए। इस पॉइंट ओ को बी पॉइंट से ज्वाइन करिए। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ओ ए बी। राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, it will give you 1 plus 1 2, so OB is equals to root 2. That means the length of OB is actually root 2. I have to take a compass, put the point of compass here at point O, put a pencil tip at this point, take OB as the radius and mark a point and mark a
cut an arc something like this. Understand the point very carefully. Now, because length of OB is √2, so O center हो गया इस arc का, तो O से लेकर यहां तक जो भी पोर्शन आपके पास आएगा, O से लेकर इस पॉइंट को आपने अगर सपोज C मान लिया है, O से लेकर C तक आपके पास जो भी लेंथ आएगी वो इनफैक्ट OB के बराबर है. And OB is √2, so OC is also √2. The length of OC is √2. The length of OB is √2. The length of OC is √2. In this manner, you can mark other rational numbers also. I will show you a few more, like 2 plus √2. 2 plus √2 is also a rational number, because when we add a rational number into a rational number, that gives us irrational number. So I am showing you here how to plot a 2 plus √2, an irrational number on a number line. It's a very simple extension of √2 only. So draw a number line, take 0 and 1, take 1 and 2. So I have covered up 2 on the number line. From here, this point is O, and take this point as A. Now we further move on. You cover up this A and B point. At point B, draw a perpendicular of length AB only. इस पॉइंट को C मार्क कर लीजिए, AC लाइन ज्वाइन करिए, A पॉइंट को सेंटर लेकर C पॉइंट तक का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए. ये पॉइंट मान लीजिए P आ गया. ना ये पॉइंट A था, जो ये AP है, ये वैल्यू कितनी है √2, और ये वैल्यू कितनी है 2. I got 2 plus √2 from O to P, because OP is actually OA plus AP equals to 2 plus √2. It's a value of OP. I can plot like this many other numbers on the number line. So that is how, if I take more examples, √5 and all these, I can draw on number line. So आपको अपने दिमाग में पहले √5 का वो स्प्लिट सोचना है, ऐसे नंबर्स सोचने हैं, कंप्लीट नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 5 आता है. So you can see that 5 is actually 2 squared plus 1 squared gives me 5. That means √5 squared equals to 2 squared plus 1 squared. Got the idea? So what you got to do is that from point O, you cover up 2. At point 2, draw a perpendicular of 1 unit. इसको ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया. आप OB को ज्वाइन करिए, O पॉइंट पर कंपास रखकर आर्क लगा दीजिए. आपका कंपास से परफेक्ट आर्क आ जाएगा. दिस पोर्शन, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान. दिस पोर्शन फ्रॉम O to A is actually, this is 2 square. It is 2 square. It is 1 square. That is √5. OB की लेंथ और OA की लेंथ बराबर है, so OA कितना है √5 के बराबर है. So the value from O to A is, I don't think मैंने A और P पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया है. P पॉइंट मैंने ये मान लिया है और O पॉइंट यहाँ मान लिया है. ये OA जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये आपके √5 की वैल्यू हो गई. √5 is something 2.236. You can see it is coming between 2 and 3. Your question is perfectly correct. I hope this video has made you clear
about the properties of rational and irrational numbers. I'm ending this video here to give you a basic idea of rational numbers and irrational numbers. Beyond this, the second video in this playlist. Now, understand, I'm going to post 4 or 5 videos for this chapter. I'll making a playlist of this in my channel. आप लोगों को एक पूरी playlist मिलेगी first chapter पर. आप उस पूरी playlist को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं. ये वीडियो नंबर 1 है. मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद आगे के और टॉपिक्स का डिस्कशन होगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इरैशनल नंबर्स की और हम उनको किस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं और क्या सर्ड्स होते हैं और क्या मिक्स्ड सर्ड्स होते हैं. देयर लॉट टू कम. सब्सक्राइब चैनल प्लीज and share this video, like this video as well. See you guys. Bye bye. Thank you very much.